So technically, mole is this unit amount that scientists use in chemistry, and unit 1 mole of anything equals to 6 into 10 per 23 number of particles, and that has the mass equal to its MR. ये बेसिक रिलेशन है जो आपको मोल्स में याद रखना है कि किसी भी चीज़ के 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स होते हैं 6 into 10 per 23 पार्टिकल्स, और उसका जो मास है उसके MR के इक्वल होता है। अच्छा, अब मोल की रिवीजन का बेस्ट तरीका ये है कि हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रैंडम एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं, एंड बिफोर दैट आई विल जस्ट राइट सम फार्मूलाज दैट वी हैव इन मोल्स। तो मोल को हम केमिस्ट्री में स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं, तो मोल इक्वल्स टू मास ओवर MR, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं n equals to m over mr. That's the most basic and common formula of moles. फिर इसी टॉपिक में मोलर वॉल्यूम ऑफ गैसेस का कॉन्सेप्ट आता है। मोलर वॉल्यूम ऑफ गैसेस में जब आप किसी गैस के मोल्स निकालते हैं वॉल्यूम से, तो फिर 1 मोल गैस इज 24 dm cube. तो moles of gas equal to volume upon 24 dm cube. जब आप 24 dm cube यूज करेंगे तो फिर volume has to be in dm cube as well. इसी तरह फिर मोल्स में आगे कंसंट्रेशन की कैलकुलेशंस है। कंसंट्रेशन कैलकुलेशंस में कंसंट्रेशन इक्वल्स टू मोल्स ओवर वॉल्यूम, दैट इज C इक्वल्स टू N ओवर V. तो ये एक तरह से तो 3 बेसिक फार्मूलाज हैं। क्वेश्चंस को हम फार्मूला से भी करते हैं, रेशियो से भी करते हैं, लेकिन ये 3 फार्मूलाज आपको टाइम सेव करते हैं एमसीक्यूज में, वहां पर हेल्प होती है इनसे। अच्छा, अब मैं कुछ जैसे मैंने कहा क्वेश्चन एग्जांपल्स लिखता हूँ, इनको सॉल्व करते हैं और इससे जरा मोल की क्विक रिवीजन हो जाएगी। मोल्स के केस में चूंकि आपको एटॉमिक मैसेज की जरूरत पड़ती है काफी ज्यादा, तो वो भी मैं इधर लिखता हूँ जो हम यूज करते हैं इन क्वेश्चंस में। Commonly, the elements that we have include carbon, nitrogen, oxygen, hydrogen, sulfur, phosphorus, sodium, and sodium 23. सल्फर के बाद फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम 39। तो ये कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जो आपको कंपाउंड्स में मिलते हैं, इसलिए इनके एटॉमिक मैसेज मैंने यहाँ लिख दिए। मैग्नीशियम 24। सो लेट्स से कि अगर एक क्वेश्चन है इसमें, यू आर सपोज्ड टू फाइंड मोल्स इन 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का एटॉमिक मास भी मैं इधर लिख देता हूँ, कैल्शियम 40 है। और इसके बाद you are supposed to find moles in 20 dm cube of CO2 gas, or moles of oxygen in 4 grams of sodium nitrate। ये कुछ 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं, छोटे छोटे, इनको हम सॉल्व करते हैं। आप लोग स्टार्ट करें, मैं ज़रा हाँ जो मैं आप लोगों को देखने जा रहा था। You came from math class? On public demand.
moles revision. किधर है, कासिम आया? अच्छा, तो ये फार्मूलाज लिखे मैं, और ये मैंने कुछ 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं, फिर थोड़ा लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले भी एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ मोल्स की क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं आज। आ जाओ भैया, आपका ही वेट कर रहा हूँ, बाकियों ने पढ़ ली है ये जी, बैठे। मोल बेसिकली केमिस्ट्री में यूनिट है जो साइंटिस्ट यूज करते हैं टू क्वांटिफाई थिंग्स, केमिकल्स। So 1 mole of anything has a large number of particles in it, ठीक है ना, 6 into 10 to 23 particles होते हैं उसमें, जिसको हम एवोगैड्रोस कांस्टेंट भी कहते हैं। और फिर 1 मोल का, किसी भी चीज के 1 मोल का मास उसके एमआर के इक्वल होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, जो हम एटॉमिक मासेस को ऐड करके निकालते हैं। और उसके बाद ये मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे, इनको हम सॉल्व करेंगे, इसी तरह रिवीजन होती है। ये 3 फार्मूलाज हैं, बेसिक फार्मूलाज हैं मोल्स के, जो मैंने इधर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। एक तो ये है कि अगर आपने मोल्स निकालने हैं मैथ से, तो जो गिवन मैथ है उसको डिवाइड कर दोगे आप उस कंपाउंड के एमआर के साथ। फिर गैसेस के लिए अगर आप मोल्स निकालते हैं तो गैसेस का वॉल्यूम भी होता है फिक्स्ड 24 डीएम क्यूब। तो फिर आप गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस को 24 से डिवाइड कर दें तो आपके पास गैस के मोल्स आ जाएंगे, और कंसंट्रेशन में मोल्स और वॉल्यूम। तो अभी इन एग्जांपल्स को मैं सॉल्व करता हूँ, साथ साथ आप लिखें भी, ट्राई खुद भी करें। मोल्स ओवर वॉल्यूम, इसमें ये जो वॉल्यूम है ये डीएम क्यूब में होना चाहिए, एंड 1 डीएम क्यूब इज 1000 सीएम क्यूब।
पूछो। अच्छा, अब आप देखें इसमें कॉमन इंस्ट्रूमेंट. So when you try and find moles in 10 grams of calcium carbonate, you should know that this is the formula that you use. So I've got the mass, I need to work out the MR of calcium carbonate. So MR of calcium carbonate would equal to the sum of all the atomic masses, right? According to the number of atoms. These are the atomic masses which you get from the periodic table. So calcium will be 40, carbon is 12, oxygen 16 times 3. So that will be 100, I'm sure, right? Calcium carbonate ka MR 100. So just divide the given mass 10 in the question with 100 and you get 0.1 moles, right? तो जब आपको किसी चीज का mass given है, so from mass if you wish to find moles, divide the mass of that thing with the MR of that thing, right? Relative molecular mass. And MR is calculated by using the atomic masses multiplied by the number of atoms. No. MR का फॉर्मूला कोई नहीं. MR का फॉर्मूला सिंपल ये है कि सारे एटॉमिक मैसेज को ऐड कर देना आपने. कैल्शियम का एटॉमिक मैस कितना है? 40 है. कार्बन का 12 है. ऑक्सीजन 16 होता है लेकिन नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई करेंगे. ये तो गिवन है ना. ये फिक्स है, ये फिक्स नहीं है. ये तो क्वेश्चन में कभी 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा. जो भी गिवन है उसको उसके MR से डिवाइड कर देना बस. MR कैलकुलेशन बड़ा बेसिक चीज है, ठीक है, और ये आपको आनी चाहिए स्टेज पे क्विकली. अच्छा, बट सेकंड पार्ट में CO2 गैस और उसका वॉल्यूम गिवन है. अब जब मुझे कोई गैस का वॉल्यूम गिवन है और उससे मैं उसके मोल्स निकालना तो आई डिवाइड द वॉल्यूम गिवन बाय 24. सिंपल आंसर आ जाएगा क्योंकि 1 मोल ऑफ एनी गैस इज लाइक 24 dm3. तो 20.24 will be 0.83 moles. ये MCQs लेवल शॉर्ट इजी क्वेश्चंस. थर्ड वाला थोड़ा मैंने ट्रिकी बनाया जरा सा, इतना मुश्किल वो भी नहीं है. उसमें मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करने हैं. तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए वेरी गुड. हाँ, उससे भी कर सकते, उससे भी कर सकते, लेकिन वो मुश्किल है. इसका तरीका ये है कि पहले आप 4 ग्राम ऑफ NaNO3 के मोल्स निकालो with that formula. First of all, you'll have to work out the MR of NaNO3. वो निकालोगे मोल्स और फिर रेशियो लेके हम ऑक्सीजन फाइंड करेंगे, ठीक है ना. मैं वो बताता हूँ, पहले आप मोल्स ऑफ NaNO3 निकालो. The MR of sodium nitrate. Sodium is 23, nitrogen 14, oxygen 48. So what's the MR? 85. Now these are the moles. This is the MR of sodium nitrate. So first work with the moles of sodium nitrate. So 4 upon 85.
0.04. फोर सेवन लिख लेते हैं चले। अच्छा, these are the moles of sodium nitrate. अब रेशियो लेके हम ऑक्सीजन निकालेंगे। ठीक है, रेशियो कैसे लेंगे? ये सोडियम नाइट्रेट से हम रेशियो लेंगे ऑक्सीजन की, the atom of oxygen. In one sodium nitrate, how many oxygen do we see? तो 0.047 में oxygen will be X. So we just cross multiply this. Unitary methods. एक सोडियम नाइट्रेट में 3 ऑक्सीजन है, तो इसमें X होगी ना 3 times of this. So this times 3 कितना आता है? 0.141. This is the answer. Like अगर किसी compound में you further find the elements moles, so you just do the ratio further than that. Mr. Umar, you need to be quick. I need to use this space. The formulas will be there, but I need to use this space. Up, we try and do one example of stoichiometric calculation, the ones which are based on the equation. Okay, ना जो ज़्यादा structured paper में आते हैं, stoichiometric calculations वो करते हैं पहले. I'll use this right now. Yes. Now, let's say you got some reaction in which one thing is given and the other one you're finding, but you need balanced equation for that. So that will be number 2 example. So you're supposed to find the mass of water formed when 2 grams of magnesium oxide reacts with excess HCl. Like you got 2 grams of magnesium oxide and it reacts with excess of HCl, and we need to try and find the mass of water which is formed as a result of this reaction. Now for such a question, first thing you should do is try and make a balanced equation of the reaction between the given substances. Of metal oxide जब HCl से react करेगा, it will form salt and water. ठीक है, तो अब आप लोग जरा equation बनाएं इसकी पहले balanced, and then we can do the ratio and everything. Balanced equation. So magnesium oxide reacts with HCl to form IGCSE. Yes, magnesium chloride and H2O, and you balance it by 2 HCl. What you need to do in such questions, that use what is given. What is given? Mass of magnesium oxide, and find what you're looking for in the question directly. Don't look at the other things. I don't have anything of HCl in the question, it says excess.
I don't know how much extra, but I know how much magnesium oxide I have. इसका जो best तरीका है, write the given like magnesium oxide given and ratio it with what you're finding, water. ये given है, इसके हम रेशियो ले लेंगे इससे डायरेक्ट जो मैं फाइंड कर रहा हूँ बस. और फिर क्वेश्चन में देखो मास गिवन और मास फाइंड कर रहे हैं तो डू द डायरेक्ट रेशियो, मास टू मास रेशियो, बिकॉज इक्वेशन टेल्स यू एवरीथिंग. इक्वेशन आपको दोनों रेशियोज देती है. सो मैग्नीशियम ऑक्साइड के 1 मोल का मास आप निकालोगे, इसका एमआर, फिर वाटर का एमआर निकालोगे, मास टू मास रेशियो, फिर गिवन के अगेंस्ट एक्स. इसको जरा आप लोग ट्राई करो, मैं भी फिर सॉल्व करता हूँ. हाँ जी बिल्कुल. तो 1 मोल इसका है, इधर 1 मोल है, ये 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है. 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड इज 40 ग्राम, इसका 18 ग्राम. नाउ दिस रेशियो कम्स फ्रॉम इक्वेशन and it tells me कि how much water is formed against 40 gram of magnesium oxide. अब क्वेश्चन में 2 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड गिवन है, तो अगर 40 के अगेंस्ट वाटर 18 इज फॉर्म्ड, तो 2 ऑफ, माशाल्लाह इसको क्लैपिंग होनी चाहिए. देखो इसके 40 के अगेंस्ट वाटर कितना बन रहा है, 18. तो इसके 2 के अगेंस्ट कितना बनेगा, x बनेगा ना, रेशियो से करोगे. 2 को 18 से डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई करना. So 2 of this would be x of water, unitary method, cross multiply this. This x would be 2 times 18 upon 40, 0.9 gram. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट 3 पार्ट्स दैट वी डन. इसमें क्या है, यू आर गिवन द अमाउंट ऑफ वन थिंग एंड यू आर फाइंडिंग अनदर थिंग. आपको गिवन मैग्नीशियम ऑक्साइड था, बट उसको यूज करके फ्रॉम द इक्वेशन बाय रेशियो मेथड we worked out how much water can be formed. The first ratio will come from equation and second will be the one which is in the question. ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कह देता हूँ, नेक्स्ट पार्ट एक बना देते हैं, फाइंड मास ऑफ वाटर, फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट में इफ यू वर आस्क्ड टू फाइंड मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म्ड, मतलब वाटर के साथ साथ मैग्नीशियम क्लोराइड भी तो बन रहा है ना. तो अगर आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड व्हिच इज फॉर्म्ड, तो अब आप रेशियो लोगे, किस किस की लोगे, बताओ बताओ. यू टेक द रेशियो ऑफ व्हाट इज गिवन, मैग्नीशियम ऑक्साइड की रेशियो लोगे, क्योंकि गिवन तो वही है ना, विद मैग्नीशियम क्लोराइड. नाउ क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 आप ले लेंगे. So magnesium oxide ratio, magnesium chloride. Again you can stick to mass and mass ratio. फिर MR निकालें, फिर रेशियो से करें यूनिटरी मेथड्स.
How much? Let's see. So the MR of magnesium chloride, 24 plus 70, right? Chlorine is 35 times 2. So how much is that? 94? 4.7. So 40 gram of this is 94 gram, right? So 2 grams should be X. So X is 2 times 94 upon 40. 4.7. And the thing is that we covered the moles, like typically teachers teach moles in 2 weeks or something. अब आप एक क्लास में या दो क्लासेस में you should have tried it before, to be honest. आपको खुद भी पढ़ते तो थोड़ा समझ आती है ना यार, क्या नहीं? I mean, not being able to find MR is not a good thing. हमें ये तो ग्रेड 7-8 के बच्चे भी MR निकाल लेते हैं. एटॉमिक मैथ्स वगैरह नहीं पढ़ते आप लोग? अभी the good thing is कि my own children are like in grade 7-8 and all, so I get to know their syllabus. फिर मैं देखता हूँ ये देखो ये भी पढ़ा होता है, इन्होंने ये भी पढ़ा होता है, फिर मैं वो A लेवल तक पॉइंट आउट करता हूँ. MR तो फाइंड करना सीख लो ना यार, क्योंकि so many questions you'll need MR, obviously relative molecular mass. अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये मैंने 3-4 क्लासेस का काम आपको भी इस क्लास में कराया है. बर्डन आप पे ही रहेगा जिसने मोल्स पहले नहीं पढ़े हुए, क्योंकि टीचर्स एंड पे तो यही कर सकते हैं ना, भाग भाग के करा सकते. ये मुझे आपको ऐसा फील हो रहा है मेरे साथ कर रहे हो ना. ये बच्चे अक्सर कहते हैं सर आप कराते हैं समझ आ जाती है, खुद करते नहीं आती. अब ये इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है ना? जब प्रैक्टिस करोगे, हाँ, आप नोट्स लो और उसको भी अब देखो थोड़ा सा, ठीक है ना? अच्छा खासा अभी करते हैं. क्यों नहीं, अभी करेंगे. लिमिटिंग रिएक्टेंट अभी मैं कराऊंगा. He'll faint right away. आप इसको नोट्स भेजो, मैं रिकॉर्डिंग कोशिश करूंगा कि रिकॉर्डिंग सेंड कर दूं, कोई मिल जाए. ये स्टिशोमेट्रिक है, रेशियो से. Stoichiometric calculation is where you take the ratio of one given thing and you find the other thing. At least we can try one more example right now. तो मैं इसको ओवरडू नहीं करूंगा. अभी हम पेपर्स में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, उससे एटलीस्ट इतना हो जाए कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पेपर में. नाउ अभी बल्कि इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ. आप लोग थोड़ा लेट आए इसलिए अब इतना टाइम रह नहीं गया. You have 100 grams of calcium carbonate. It's decomposed. Find volume of CO2 gas formed. इसको 100 की जगह आप कर दो 10 ग्राम. 10 ग्राम. 10 gram calcium carbonate is decomposed. Find volume of CO2 in dm cube. Like जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करेंगे तो इट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2. अब इसमें आपने रेशियो लेनी है. mass of calcium carbonate की with volume of CO2.
आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। मैं ऑलराइट, निकाल लिया? सही तो नहीं निकाला आंसर? चलो अभी पता चलेगा कि जिस बंदे ने एक क्लास में मोल्स पढ़े हैं उसका आंसर ठीक है कि जिन्होंने 3-3 हफ्ते में पढ़े उनका ठीक है। अब देखो इसके मास के रेशियो में लूंगा डायरेक्ट CO2 के वॉल्यूम से। कैल्शियम ऑक्साइड का कोई काम नहीं, मास वॉल्यूम। इसके 1 मोल का मास MR 100, कैल्शियम कार्बोनेट का MR है। हाँ ये यही तो बात है एलिजे की, एक ही कंपाउंड का MR हर क्वेश्चन में चेंज कर देती है एलिजे, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट बेटा 100 कासम मियां, ज्यादा खुश नहीं होना, आपका भी आंसर गलत है। इसके 100 ग्राम के अगेंस्ट CO2 का 1 मोल बन रहा है। CO2 के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? इधर आप इधर 24 DMQ होगा। हाँ ये इसका 2 हफ्ते बाद पेपर है। 1 मोल ऑफ एनी गैस is 24 DMQ no matter what gas। जी कोई टेंशन नहीं, पेपर में मैं याद करा दूंगा आके। अच्छा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10 ग्राम के अगेंस्ट x हो जाएगा, so it will be 10 times 24 upon 100, तो 2.4 शायद आएगा मुझे लगता है। अब्दुल्ला आपने निकाला 2.4 है। देखो शाबाश। अब ये स्टूडेंट है ना आपकी क्लास में, उसने अगले साल देना पेपर, तो उसके आंसर ठीक आते हैं। आप लोगों के 2 हफ्ते बाद पेपर है तो अभी भी 84 आ रहा है, +12 +48 100 है। और पहले क्वेश्चन में 100 निकाला है ना, कैल्शियम कार्बोनेट यूज नहीं किया था हमने। चलें अब आप लोग जाएं, और नहीं अभी कल उसे आप उसके लिए पेपर भरे पड़े हैं, कोई पेपर खोलो, कोई मोल का क्वेश्चन ट्राई करो। अभी मैं कल एक और क्लास में कराऊंगा ना, फिर आपको होमवर्क दूंगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे।